The tobacco mosaic virus was crystallized for the first time by W. M. Stanley, E. C. Stackman, A. K. Smith, Ivanovsky. So correct answer is option A. W. M. Stanley crystallizes the tobacco mosaic virus for the first time. Question number 2. The viruses contain protein only, DNA only, nucleic acid only, protein and DNA or RNA. So correct answer is option D. Viruses contain both protein as well as DNA or RNA. Question number 3. The colimavirus or cauliflower mosaic virus are a group of viruses which have double-stranded RNA, single-stranded RNA, single-stranded DNA, double-stranded DNA. So correct answer is option D. cauliflower mosaic virus के अंदर जो है वो double-stranded DNA present होता है. Question number 4. The rabies virus consists of single-stranded RNA, double-stranded RNA, single-stranded DNA, double-stranded DNA. So correct answer is option A. Rabies virus contain single-stranded RNA. Question number 5. A virus containing single-stranded RNA acts as a template for DNA synthesis is called as poliovirus, retrovirus, poxvirus, एडिनोवायरस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. रेट्रोवायरस जो है वो टेम्पलेट के तौर पर यूज़ होता है फॉर डीएनए सिंथेसिस और इसके अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 6. वायरसेस इंटर द प्लांट सेल्स ओनली थ्रू लेंटिसेल्स, वॉन्ड्स, स्टोमेटा, रूट्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी के वायरसेस जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर इंटर होते हैं बाय मींस ऑफ वॉन्ड्स. Question number 7. Influenza virus has got naked capsid, enveloped capsid, naked polyhedral capsid, no capsid at all. So correct answer is option B. Influenza virus जो है वो enveloped viruses हैं. Question number 8. The genetic material in viruses is containing only RNA, only DNA, RNA and DNA both, RNA or DNA, one nucleic acid in a virus. So correct answer is option D. जो viruses हैं उनके अंदर genetic material या तो RNA की फॉर्म में होगा या फिर DNA की फॉर्म में, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है. Question number 9. Each capsomer of tobacco mosaic virus contain amino acid whose number is. तो इसमें जो कैप्सोमर है TMV का उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन ए के TMV के कैप्सोमर्स के अंदर टोटल 158 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. राइबोवायरा. Question number 9. Each capsomer of TMV contain amino acids whose number is 158, 185, 815, 581. So correct answer is option A. The capsomer of TMV or tobacco mosaic virus contain 158 amino acids. Question number 10. Riboviria is a group of viruses which contain double-stranded DNA, single-stranded DNA, RNA, none of these. So correct answer is option C कि राइबोवायरा जो है वो ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर RNA प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वायरस? फुट एंड माउथ वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, Coliphage lambda virus, Von tumor virus. So correct answer is option A. Foot and mouth virus is known as smallest virus. Question number 12. Which of the following is the largest virus? Penicillium virus, Von tumor virus or pox virus? None of the above. So correct answer is option C. Pox virus is known as largest virus. Question number 13. Which of the following is false? Most plant viruses are RNA viruses.
Most animal viruses are DNA viruses. TMV has double-stranded RNA molecule. T4 bacteriophage has double-stranded DNA molecule. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कि जो TMV है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इंस्टेड ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, which one is absent in viruses? Replication, protein synthesis, energy liberation, mutation. So correct answer is option C. Energy liberation is absent in case of viruses. Question number 15. The wound tumor viruses have double-stranded DNA, single-stranded DNA, double-stranded RNA, single-stranded RNA. So correct answer is option C. Wound tumor virus contain double-stranded RNA. Question number 16. Which of the following is a DNA containing plant virus? Tobacco mosaic virus, tomato mosaic virus, cauliflower mosaic virus, potato mosaic virus. So correct answer is option C. Cauliflower mosaic virus contain DNA and it is a plant virus. Question number 17. Algal viruses are known as biennial viruses, cyanophage viruses, mycophage virus, phycophage. So correct answer is option D. Phycophages are known as algal viruses. Question number 18. Arthropod-borne viruses are ribovirus, reovirus, arbovirus, none of these. So correct answer is option C. Arbovirus is a arthropod-borne virus. Question number 19. Which one of the following are intracellular obligate parasites? Bacteria, viruses, slime molds, blue-green algae. So correct answer is option B. जो वायरसेस होती हैं वो इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट्स के तौर पर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो इसमें से हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को जो है सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए देखें, WM स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन बी देखें, द टर्म कंटेजियम वीवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय MW बेजरिंग, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी देखें, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर काज्ड बाय वायरसेस, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑप्शन डी देखें, वायराइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोस्की, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 21. हेल्पर वायरस इज कॉल्ड perfect phage of virus, a defective phage which help another defective phage, a latent phage, none of these. So correct answer is option B. हेल्पर वायरस बेसिकली एक डिफेक्टिव फेज वायरस होता है जो कि एक दूसरी डिफेक्टिव फेज को हेल्प प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 22. हु डिस्कवर्ड द इंटरफेरॉन? आइजैक्स एंड लिंडामैन, हॉल्म्स एंड नाइट, हार्शे एंड चेस, इंडर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आइजैक्स एंड लिंडमैन जो है उन्होंने इंटरफेरॉन डिस्कवर की थी। Question number 23. The agents which are known to cause CJD. CJD is abbreviated as Creutzfeldt-Jakob disease. It is caused by protein particles, a class of bacteria, a class of viruses, fungi. So correct answer is option A. Protein particles which are known as prions, they cause Creutzfeldt-Jakob disease. Question number 24. Virus was discovered by whom? Stanley, Ivanovsky, Harale, Beijing. So correct answer is option B. Ivanovsky discovered the virus for the first time. Question number 25. A virion is a particle without protein code virus, or enucleated virus, or a prion, or a virus. So correct answer is option D. A virion is an entire virus which consists of outer protein coat called capsid and inner core made up of nucleic acids.
Question number 26. The protein of capsomers is made up of nucleic acids, carbohydrates, fats, amino acids. So correct answer is option D. जो कैप्सोमर्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. Question number 27. Who proposed the phenerogram of Virus, Loaf and Tournier, W.M. Stanley, Wheel et al. None of these. So correct answer is option A. Loaf and Tournier proposed the phenerogram of viruses. Question number 28. A cryptogram has got how many pairs of information? 1, 2, 3, 4. So correct answer is option D. Each cryptogram contains 4 pair of informations. Question number 29. In which virus DNA is double-stranded? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. So correct answer is option B. Hepatitis B contain double-stranded DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लें. उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 30. Viroids are differ from the viruses in having DNA molecule with protein code, DNA molecule without protein code, RNA molecule with protein code और RNA molecule without protein code. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी के जो वायराइड्स हैं ये बेसिकली RNA मॉलिक्यूल हैं और इनके गेट प्रोटीन कोड नहीं होती, इसलिए ये डिफरेंट हैं वायरसेस से.